Yeah, hello everyone. Good afternoon. I hope I'm live now. Welcome all of you to the session. So this is yet another session on must-solve questions for CAT 2022 from the QA portion. Now, as you would have seen earlier, I have already done a few sessions on must-solve questions. So this is like a series that I'll continue on this channel till the CAT exam, and that will give you a regular practice of what kind of questions you must look at while you are giving mocks or while you are practicing from any book or while you are giving any topic test, sectional test, anything. You should have an idea what kind of questions you should practice. That is one aspect. Also, second aspect is discussing different types of problem solving with you. Okay, so these are the two things predominantly that we are going to focus on this like session today. And if you are new to the channel, do like our session and subscribe to the Unacademy Catalyst channel. You can see lots of good content on this channel every day. Videos related to your CAT preparation strategy, topic-based questions, practice sessions, sessions related to how to deal with the exam, profile building, and whatnot. So do subscribe to the Catalyst channel. And people attending the live, do let me know if I'm clearly audible to all of you or not. And please feel free to ask your questions at any point you want. Hello, dear. Good afternoon. Good afternoon. So let's start. This is my Unacademy Telegram channel. You can join my Telegram channel by like searching this MBA preparation hyphen Sarthak bracket UN. UN means Unacademy. This is a brief background of mine. Not long back, I was at your place, and I say this always. Whatever things I do myself, I try and share the same things in my class, so that you can benefit in the same way that I did. Now, All India mock test, very much crucial for CAT 2022 aspirants. All India mock test last 2 महीने से like an academy platform पे हो रहा है, and very good questions, very good mock test. A lot of people are participating. So definitely all of you do register for the All India mock test, free for all. Okay, you do stand a chance to win scholarships and all types of facilities you can check out here. ये सब तो मिल रहा है, but the most important part is you get to know where do you stand in terms of your preparation as compared to others, because the moment a lot of people are giving the exam, it gives you a real time idea of how others are performing, how you are performing. When it's a test which has good questions, कैसे वहाँ पे perform करो, what is going wrong for you, what is going right for you, how can you change your preparation, and all these things are needed to do. We'll learn chapters, we'll practice questions, that is one part of it, but it is very much necessary to give mocks and understand कि मुझे कहाँ पे improve करना है, कहाँ पे चीजें गलत जा रहे हैं, what can I change. Until and unless you don't give mocks and analyze, nothing is going to change. Okay, you might have absolute concept clarity, yet you will see that you are not able to translate it into scores, and that is because that takes a lot of time to understand the art of test taking. Okay, the people who score 99 are not necessarily people who are like absolute genius. ऐसे नहीं चाहिए. But you have to understand what's the right way of taking the exam. How should you approach it correctly? How should you not waste your time? These things के लिए it's very important to give mock test. So all of you do register for the All India mock test. This is a scan code. You can scan this and it will directly take you to the like registration page. You can register for free. Use my code DASLIVE to register for free. Okay, so definitely October 16th 12 to 2 p.m. All India mock test है. Please participate. Now this is a batch alert for CAT 2023. If any of you is a CAT 2023 aspirant, you can join a new batch starting October 6th. Okay, and you can use my code DASLIVE and take a subscription using this code, and you can avail a 10% discount. Now this is a course that is currently going on, 300 must solve questions on QA for CAT 2022. So you can get this in the plus section of my profile. Visit the Unacademy app or the website, go to my profile and you can check out the plus section. You will get this that course, and you can check out the questions on the course. If you have not like you are planning for a subscription, so do take a subscription using this course. Yeah. Now I'm going to start another series in this month, next series. ठीक है, नेक्स्ट सीरीज इज गोइंग टू बी, जैसे ये एक सीरीज चल रहा है मस्ट सॉल्व क्वेश्चन का, तो ये तो चलेगा एवरी ऑल्टरनेट डेज पे मस्ट सॉल्व क्वेश्चन अपना हो रहा है, बट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज इज क्विक रिवीजन सीरीज. ठीक है, it will be named as quick revision, and in this I'll be like covering concepts every class, छोटे छोटे concepts which are important to the exam.
We'll cover the concept briefly, quick revision type. I'll explain the concept and then we'll take up some important questions from that concept. So ये quick revision on QA. ठीक है? So this will be done again on the QA part. So regularly I'll be taking quick revision classes also, just like must solve questions. Okay. All right, then having said that, let us start with questions today. Let us take a look at the first question. The total money with 3 classmates A, B and C is rupees 96,000. तीनों के पास मिला के A plus B plus C you have 96,000. A gives B an amount what B already has. B then gives C an amount what C already has. C then gives A an amount what A now has. Now finally all three have an equal amount. What was the absolute difference between the original amount between A and C? So let's say original amount A, B, C का ऐसे हम लेते हैं. Simple सा question है, nothing difficult. So step 1 क्या हो रहा है? A gives B what B already has. That means A will give, तो कितना है? अभी A sorry, B के पास B है and A will give B, so A is left with A minus B. B के पास हो गया 2B and इसके पास C. Then step 2, A को कुछ नहीं मिल रहा है. B is giving C what C already has, so C के पास हो गया 2C. And step 3, C then gives A an amount what A now has. A के पास A minus B है, तो C और एक A minus B देगा. This is 2B minus C, and this is 2C minus A minus B. And finally all three have an equal amount. तो यहाँ पे मुझे मिला that twice of A minus B is equal to 2B minus C is equal to 2C minus A minus B. This is equal to 32,000 because total उनके पास 96,000 था. Now if all three have equal amount at the end, that means ये तीनों वैल्यू इक्वल है. बस अभी इसको सॉल्व करना है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं. If twice of A minus B is 32,000, I hope everyone is following this. A minus B यहाँ पे आ जाता है 16,000 and तुम 16,000 यहाँ पे पुट करोगे. In place of A minus B if you put 16,000, so I get 2C is another 16,000, which gives us C as 8,000. And if C is 8,000, 2B minus C में यहाँ पे अगर तुम 8,000 पुट करोगे, 2 into B minus C is 32,000. So 2 into B will be 40,000, which gives us B as 20,000. समझ रहे हो? And then एक आएगा वहाँ पे finally. I hope I calculate. Sorry. A small mistake. Calculation mistake हो गया. Now just 3 equations, 3 variables आराम से solve हो जाएगा. I did a mistake in calculation. तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इक्वेशन का ही ये है. यहाँ पे जब तुम 16,000 पुट करोगे A minus B को, तो दिस बिकम्स 48,000. 2C is 48,000, तो C becomes 24,000. C अगर 24,000 है, in place of C you write 24,000 here. Now 2B minus 24,000 is 32,000. So 2B is equal to 56,000. तो उसमें से C तुम्हारा आ जाता है 12,000. Only C is 24,000. 2C is 48, तो C 24. यहाँ पे तुम्हारा twice of B is 56,000, तो B यहाँ पे आ जाएगा 28,000. So twice of B is 56,000, B is 28,000. Now once you know C and B, then you can easily calculate what is A. So total is 96,000. तो यहाँ पे ये 24 हो गया and ये 28 हो गया. तो 52 हो गया. So this is like 42,000.
तो अभी हम डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं. कैलकुलेशन पार्ट यू कैन फिगर आउट. बेसिकली यहाँ पे ये इक्वेशन अच्छे से समझना है. A is giving B what B initially has, B is giving C what C initially has, and C then gives A what A now has. A, B and C ऐसे ले लेंगे, एंड पहले A B को B दे रहा है, उसका अमाउंट डबल कर रहा है, तो ये 2B हो गया, एंड A के पास A माइनस B. फिर B C को दे रहा है उसका अमाउंट डबल करके, तो C now has 2C and B has 2B minus C, and C is giving A what A now has, तो 2A minus B हो गया, A का डबल हो गया, and this is 2B minus C, this is twice of C minus A minus. Now these three amounts are equal because after all this has happened, all C have an equal amount. Each of this is 32,000. So twice of A minus B 32,000, A minus B आ गया 16. यहाँ पे 16 पुट करो, प्लस हो गया 32 प्लस 16 48, तो C आ गया 24,000. तुम C को यहाँ पे पुट करो 24 प्लस 32 आई गेट 56,000, तो B आ जाता है 28,000, एंड ये 28,000 24,000 52,000 टोटल दिस, तो ये 44,000 है. 42 लिखा, A will be 44,000, and once A is 44,000, तो अभी ये 44,000 है एंड C के पास है 24,000, तो व्हाट इज द डिफरेंस? 20,000. सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चन. मैंने थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिया, बट एनीवेज आई होप इट मेक्स सेंस टू एवरीवन. नथिंग डिफिकल्ट इन दिस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. तो वो था सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन. यहाँ पे देखो, इफ x into x minus a is 6 whole into 1 plus a square and a is given as a natural number. So now, for how many values of a is x a natural number? So here x square minus ax, इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं. It is 6 plus 6a square, or I get x square minus ax, and then you can bring it to this side, minus 6 plus 6a square. This is equal to 0. Either you can solve it as a quadratic, इसको तुम क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हो, एंड देन यू हैव टू चेक इफ a इज अ नेचुरल नंबर. इसका डिस्क्रिमिनेंट यूज करके आएगा. इफ a इज अ नेचुरल नंबर, so for how many values of a is that? That is one way of solving, like using discriminant. Is this making sense? Simple है question, not difficult. X into x minus a is 6 plus a square यहाँ पे, where a is a natural number. Then for how many values of a कितना आ रहा है? या तो वैसा कर सकते, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट यू कैन सॉल्व. दिस इज मेथड 1. और तुम और एक मेथड में, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तुम वैसे भी सॉल्व कर सकते हो. मल्टीपल मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, you can use that also. So I can write x into x minus a, 6 plus 6a square. So this is x square minus ax is equal to 6 plus 6a square. Now I'll write it in this way, x square minus 2 into x into a by 2 plus a by 2 का होल स्क्वायर. समझ रहे हो? ये क्यों किया मैं? सो दैट इट बिकम्स a square minus 2ab plus b square. बट इन दैट प्रोसेस तुमने एक a by 2 होल स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड कर लिया यहाँ पे. दिस मेथड इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन. जो a by 2 का होल स्क्वायर ऐड किया, यू हैव टू एक्सक्लूड दैट आल्सो. So this becomes x minus a by 2 का whole square. This is equal to 6 plus 6a square plus a square by 4. So this becomes 4 6 25 by 4a square. X minus a by 2. तो अभी फिगर आउट करना है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a इज दिस स्क्वायर रूट. तो तुम यहाँ पे भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो. x minus a by 2 is square root of this thing.
4 + 6 24 + 25a² by 4। अगर मैं a को 1 पुट करता हूँ तो 25 + 24 by 4 का स्क्वायर रूट, तो 49 by ये 7/2 आ सकता है a को 1 पुट करने से। सिमिलरली व्हाट कैन बी द अदर वैल्यूज ऑफ a? कैन देयर बी एनी मोर वैल्यूज ऑफ a? a सिर्फ नेचुरल नंबर ही हो सकता है। a अगर तुम 2 पुट करोगे 25 × 4 124 नहीं हो रहा है परफेक्ट। a को 3 पुट करोगे तो 9 × 25 225 + 24 अगेन नहीं हो रहा है। a को 4 पुट करोगे 16 × 25 400 आ जाएगा, 424 अगेन नहीं हो रहा है। टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। इसको या तो तुम ऐसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सॉल्व कर लो, नहीं तो तुम इस वे में सॉल्व कर लो यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट भी। इसका रूट्स निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट को रियल नंबर करना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करोगे, वहां से भी आंसर आता है। Quadratic, more or less, if nothing comes to your mind, most of the times discriminant at least gives you an idea of what the roots are going to be and how I should approach. ठीक है, तो ये एक सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, ये क्वाड्रेटिक का हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस वन इंपॉर्टेंट थिंग, देन विल कम टू दिस क्वेश्चन। यू कैन सी दिस ऑल्सो, ये कर लेते हैं, फिर विल गो टू Wilson's theorem. I wanted to discuss Wilson's theorem in today's session, but let us see this question, फिर लास्ट दो क्वेश्चन वहां पे। A rhombus with side 4 cm is rotated around its longer diagonal to make a solid. If the length of the shorter diagonal of the rhombus is 2√7 cm, what is the volume in cubic centimeter of the solid thus formed? सोच लो ऐसा एक rhombus है, I think this is a rhombus. And I'll take it in this way, let AC and BD है, तो rhombus is rotated around the longer diagonal, तो let AC be the longer diagonal and let BD be the shorter diagonal. ठीक है, BD का लेंथ दे दिया है 2√7, तो आई कैन राइट इट इन दिस वे दैट rhombus का जो डायगोनल्स जहाँ पे मीट करते हैं, ये तो एक तो 90 डिग्री होता है एंड देन ये दोनों बाइसेक्ट होता है √7। rhombus का साइड यहाँ पे आ गया 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज रोटेटेड अराउंड इट्स longer diagonal टू मेक अ सॉलिड। तो ये आफ्टर रोटेशन जो सॉलिड आएगा तुम्हारा, that is basically two right circular cones, जो कोन टाइप का फिगर हो जाएगा ये ऐसा, when that will be formed longer diagonal के अराउंड तुम उसको रोटेट करोगे, two right circular cones हो जाएंगे। Now what is the length of the longer diagonal? I can calculate AO as 4 square minus √7 square का स्क्वायर रूट, तो 16 minus 7 का स्क्वायर रूट है श्रीधर, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो इफ AO इज 9 का स्क्वायर रूट, सॉरी, तो AO आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स तुम्हारा जो कोन आएगा, नाउ ट्राई एंड इमेजिन कि अराउंड AC यू आर रोटेटिंग एंड यू विल गेट अ सॉलिड फिगर विच इज बेसिकली टू कोन्स जॉइंट, एक अपसाइड डाउन एक डाउन साइड अप, ऐसा है उल्टा करके, एक कोन सीधा है और एक कोन उल्टा करके, यू आर मेकिंग अ 3D फिगर। तो बेसिकली द आफ्टर रोटेशन जो सॉलिड फॉर्म हो रहा है, इट इज बेसिकली टू राइट सर्कुलर कोन्स पुट टुगेदर। तो फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दस फॉर्म। वेरी इजी क्वेश्चन, बस हमें विजुअलाइज कर पाना चाहिए। So twice of the volume of one cone pi, radius of the cone will be how much? √7. Pi √7 का square into h. h is the height of the cone which is 3. तो 3 तो कैंसिल हो गया, तो 2 into 22/7 into 7 into 7, तो √7 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आई गेट 44 सेंटीमीटर क्यूब। Simple, twice the volume of the cube, volume of the cone
बट कोन का जो हाइट है दैट इज हाफ द हाइट, मतलब ऐसे कुछ फॉर्म होगा. दिस इज लाइक द बेस. ये ऊपर एक कोन रहेगा कोन 1 एंड नीचे एक कोन रहेगा कोन 2. होप दिस मेक सेंस. इजी क्वेश्चन, नथिंग डिफिकल्ट. जस्ट यहाँ पे जब ऐसा बोलेगा कि इट इज रोटेटेड और इट इज शिफ्टेड, तो तुम्हारा माइंड में ट्राई एंड विजुअलाइज कि व्हाट काइंड ऑफ फिगर इज गोइंग टू बी. एक तुम्हारा काइट टाइप का है, उसको तुम ऐसा रोटेट कर रहे हो, तो बेसिकली इट विल फॉर्म अ 3D फिगर एंड वो 3D फिगर इज लाइक टू कोन्स. क्योंकि एक ट्रायंगल को अगर तुम ऐसा रोटेट कर रहे हो अबाउट इट्स बेस, तो इट फॉर्म्स अ 3 डायमेंशनल फिगर विच इज लाइक अ कोन. ठीक है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Before going to the theorem, let me just discuss one small rule that is called Wilson's theorem. Wilson's theorem says for a prime number p, the remainder of p minus 1 factorial divided by p is p minus 1. For an example, I'll take examples also. Remainder of p minus 2 factorial divided by p is equal to 1. This is the main theorem. उसके बाद p minus 2, p minus 3, p minus 4 we will derive. यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, पूछेगा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 16 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 17. तुम सीधा सीधा 16 लिख सकते हो डायरेक्ट. व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 21 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 23. तो सीधा आंसर इज 1. You get direct questions from Wilson's theorem and very easy. Similarly, remainder of p minus 3 factorial. Most of the books you will find till p minus 1, p minus 2 factorial. p minus 3 भी derive तो हो सकता है, but you can write it directly using this. मैं इसका भी formula दे देता हूँ so that you can directly apply and find out. Suppose ऐसा पूछा find the remainder of 16 factorial divided by 19. तुम सीधा 19 minus 1 by. So remainder of p minus 1 factorial, p minus 2 factorial, p minus 3 factorial. Sometimes, not always, although it's very rare, but sometimes ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है फॉर p minus 4 factorial. p minus 4 factorial, तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं p minus 4 factorial डिवाइडेड बाय p, उसका रिमाइंडर क्या आएगा. बेसिकली इसके दो पॉसिबल आंसर हैं. This has two possible answers. It is 1 plus p by 6. If p, your prime number, is in the form 6k minus 1, and it is 1 minus p by 6 if the prime number p is in the form 6k plus 1. इस 6p minus 1 plus 1 क्या है. If p is a prime number, then ये prime number का ही property है that a prime number can be expressed in the form 6k plus minus 1 except 2 and 3. तुम कोई भी प्राइम नंबर उठाओ, या तो वो 6k plus 1 में रहेगा, नहीं तो 6k minus 1 में रहेगा. Vice versa is not true, but any prime number has to be 6k plus minus 1. तो अगर 6k minus 1 में रह रहा है, then my remainder is 1 plus p by 6, and 6k plus 1 में रहेगा तो remainder is 1 minus p by 6. Very important formula, and it will save you a lot of time. You don't have to like solve anything. So for example, I'll say what is the remainder and 103 factorial is divided by 107. तो पहला चीज तुम्हें इवेल्युएट करना है, ये जो प्राइम नंबर है 107, it is 6 into 18 minus 1, so it is in the form 6k minus 1. Hence the remainder is 1 plus p by 6, 108 by 6. कितना इजी देखो, डायरेक्ट थ्योरम, वेरी इजी, जस्ट 4 clauses. Actual clause is this, remainder of p minus 1 factorial divided by p. This is the actual theorem. ये सारे चीजें उससे डिराइव हुआ है, जस्ट उससे डिराइव हुआ है. p minus 2, p minus 3, p minus 4, p minus 5 भी हम डिवाइस कर सकते हैं फॉर्मूला. नो नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला. ठीक है. होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू. Very basic questions, not very difficult questions.
तो सपोज एक क्वेश्चन इसका देखते हैं. मान लो क्वेश्चन इज लाइक दिस. फाइंड द रिमाइंडर then let's say 103 factorial to the power 109 is divided by 107. This is the question. 103 factorial to the power 109 is divided by 107. So looks like a lengthy one, but बहुत ही easy question है if we know the rules. 103 factorial to the power 109 divided by 107. Now we know that remainder of only 103 factorial divided by 107. अभी कैलकुलेट किए 1 plus p by 6, क्योंकि ये 6 के -1 फॉर्म में है, so 1 plus p by 6, so I get 18 here. And once you get 18 here, I can expand it in this way: 103 factorial into 103 factorial into 103 factorial and so on. How many times? 109 times. And now this thing is divided by 107. Now every time you divide 103 factorial by 107, the remainder is 18. Basically the answer reduces to this remainder of 18 to the power 109 divided by 107. Now there is another theorem, जिसको हम फॉर्मेट्स थ्योरम बोलते हैं, जो प्राइम नंबर्स में यूज होते हैं. फॉर्मेट्स थ्योरम. And the theorem is this: for any prime number p, छोटे छोटे बेसिक इजी थ्योरम्स है. For any prime number p, remainder of a to the power p minus 1 divided by p is equal to 1. So for an example, I can write 16 to the power 12 divided by 13, the remainder is 1. 16 to the power 12 divided by 13, the remainder is 1. So what I'll do is, यहाँ पे जो 18 to the power 109 है, I'll break it as 18 to 18 to 18 to 18 6 times. तो 108 हो गया. Sorry, 107 is already a prime number, तो 106 तक तो रिमाइंडर 1 आ ही जाएगा, isn't it? I'll break it in this way because 107 is a prime number. So I'll write 18 to the power 106 to 18 into 18 divided by 107. And in this case the remainder is 1. Format theorem use करके. So you are left with this 18 into 18 into 18. ये जो सारे theorems हम apply कर रहे हैं just to reduce the question. Just ये simple theorem use किया. अगर नीचे prime number p है, power p minus 1 होगा तो remainder 1 आ जाएगा. So here we have prime number 107, तो power 106 में remainder 1 आएगा. बाकी 3 18 रह गए. 18 into 18 is 324 into 18 divided by 107. 324 divided by 107, remainder is 3. 107 3 जा 321 आएगा. तो ये 3 into 18, final remainder is 18 divided by 107, remainder is still 18. यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो 3 into 18, तो फाइनल रिमाइंडर इज 54. सिंपल रूल्स. पहला यहाँ पे विल्सन थ्योरम यूज हो गया, so I could sort out the factorial part, and then format theorem, छोटा सा एग्जांपल हुआ, and we got this. That's it. Next one. नॉट डिफिकल्ट. तो स्पेशली जो विल्सन्स का मैंने 4 रूल बताया यहाँ पे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड यहाँ पे 4. डू नोट दिस डाउन, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. विल्सन्स का ऐसे डायरेक्ट p-4, एंड दिस कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन
यू डोंट नो द फॉर्मूला, इफ यू नो द फॉर्मूला आराम से बना लोगे. 1 प्लस पी बाई सिक्स, 1 माइनस पी बाई सिक्स, डिपेंडिंग ऑन पी का क्या फॉर्म है. अगर 6 के -1 में है तो प्लस पी बाई सिक्स करो, एंड 6 के प्लस -1 में है तो 1 माइनस पी बाई सिक्स. ठीक है. और एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रिमाइंडर्स. सब पूछेगा फाइंड द रिमाइंडर when 555 up to 46 digits is divided by 23. 555 up to 46 digits is divided by 23. इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए दो सिंपल रूल तुम्हें माइंड में रखना है. रूल नंबर 1 is any digit a repeated for 2p minus 1 times when divided by p the remainder is the digit itself. ठीक है. And again rule number 2, if repeated, same case, any digit a if repeated for 2p minus 2 times then the remainder will be 0. That means यहाँ पे देखो प्राइम नंबर क्या है 23 which is p. तो अगर p is equal to 23 तो ये डिजिट 5 मेरा रिपीट हो रहा है. तो 2p minus 1, that means still 45 digits, the remainder is the digit itself, that is 5. कुछ सॉल्व नहीं करना है, just क्वेश्चन पढ़ के आंसर. If any digit is repeated for 2p minus 1 times then the remainder is the digit itself. So 2p minus 1 means 2 into 23 minus 1, 45 digits तक अगर रिपीट होता तो रिमाइंडर would have been 5. अगर 44 digits, 2p minus 2 means 44 आता, till 44 digits the remainder is 0. बट अगर 46 digits हो रहा है तो how to solve? So I'll write remainder of 55 up to 46 digits, this divided by 23. So I'll write it in this way, it is 555 up to पहले 45 जितना तक पता है उतना ले लेते हैं, फिर उसमें 10 मल्टीप्लाई किया. तो 10 मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ ना, यू क्रिएट द 46th डिजिट. 555 up to 46 digits is a 46 digit नंबर. मैंने लिया 555 up to 45 digit बिकॉज मुझे उसका रिमाइंडर पता है. बाहर एक 10 मल्टीप्लाई किया तो एक 0 ऐड हो गया. 46th digit is created, but you have to add 5 because all digits are 5. This divided by 23. अब 23 को इससे जब तुम डिवाइड करोगे, from rule number 1 the remainder is the digit itself, that means यहाँ पे 5. So basically it becomes 5 into 10 plus 5 when divided by 23. So 55 when divided by 23, रिमाइंडर कितना आ जाएगा ना 9. 23 2 या 46, तो 4 plus 5 9. वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स. एंड कितना इजी है, मतलब इसको ऐसा, इसका एक डेरिवेशन भी है, वी डोंट नीड टू गो देयर एंड फाइंड द डेरिवेशन. सीधा सीधा 2p minus 1 तक डिजिट इटसेल्फ, 2p minus 2 रिमाइंडर 0. एंड नॉट जस्ट 2p minus 2, एनी मल्टीपल ऑफ 2p minus 2 पे भी रिमाइंडर इज 0. So remainders is a very interesting area in numbers. Okay, but don't waste too much time on remainders also, because ऐसा नहीं कि बहुत सारे questions आएंगे, but it's a huge area. But at least reminder के जो छोटे छोटे shortcuts है, the basic questions on reminder, all of us can follow that as well. क्योंकि अगर उससे आ जाता है तुम बहुत easily आंसर निकाल पाओगे अगर वहां से आता है, rather than wasting my time in some other question. ये देख के ही हमें पता चल जाएगा आंसर कि हाँ चलो 46 दिया है, 45 तक तो रिमाइंडर 5 है और एक 5 ऐड होके आ जाएगा आंसर. 5 into 10 plus 5, 47 देता तो 5 into 100 plus 55 एंड सो ऑन. उसी पैटर्न में हम कर सकते हैं.
Okay, so hope these questions made sense and you got an idea. So we solved questions on simple equation, a quadratic polynomial, real values, natural numbers का आ गया, and then rhombus हो गया यहाँ पे, mensuration का, Wilson's theorem and Fermat's theorem. Please keep writing these questions at a different place and try solving similar questions. Okay, you can get similar questions in my courses also. If you want to take a subscription, you can use this code DASLIVE and get a 10% discount as I mentioned earlier. Now let's crack verbal A to Z. Okay, so you can subscribe, so you get a daily dose of vocab, grammar lessons, RC कैसे पढ़ते हैं, editorial कैसे, analysis का कैसे होता है, and क्या tricks होते हैं while reading RC and all, because it's very important. You read a lot in the BRC section. Specifically for that ये start हो रहा है नया channel. Let's crack verbal A to Z. Now Unacademy previous year questions, you can get all the previous year questions in the test format on the Unacademy platform. Very necessary for all of us to solve previous year questions. Gives us an idea of what is the expectation of the exam from a candidate. Let's say we are reading quadratic polynomial, कितना तक पढ़ना चाहिए? We are reading functions, कितना तक पढ़ना चाहिए? We are reading profit loss and discount. Till what depth or what difficulty should I practice question? How would I get get that idea कि कैसे करना है, कितना तक करना है? For that, previous year exam the questions are a very like crucial like indicator. ऐसा समझ सकते. Now these are the plus and iconic subscription plans. So you can take a subscription by using this code and get a 10% discount. That is it from my end for this session. We'll meet again in the next session. And as I mentioned earlier, दो series चलेगा. एक series तो ये चल रहा था must solve questions का, और एक series like I have mentioned I think this Saturday से वो start होगा on this channel. So that is quick revision, concept plus practice. People new to the class, or if you are attending my class for the first time, do subscribe to the Unacademy CAT-alyst channel, like the video, share it with your friends who are also CAT 2020 aspirants, and keep solving, keep learning. Thank you and have a nice day. Bye bye.